नमस्कार साथियों, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में हम आपका स्वागत करते हैं। मैं हूं अजय कुमार। And I'm Surangya. Let's take a look at today's headlines. यूरोपियन संघ के सांसदों के विरोध में कश्मीर में प्रदर्शन। मेघालय में एम्बुलेंस कर्मचारियों हड़ताल पर। इजरायली स्पाईवेयर के जरिए पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जासूसी। फिलिस्तीनी सांसद खालिदा जरार गिरफ्तार। पेरुवियन खनन परिषद ने टिया मारिया परियोजना के लिए लाइसेंस को मंजूरी दी। और अब चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ। 23 सदस्यीय यूरोपीय सांसदों का गैर आधिकारिक समूह तब कश्मीर के दौरे गया जब कश्मीर की आम जनता, कार्यकर्ता और नेताओं को कश्मीर में ही कैद कर दिए जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यानी एक तरफ जब आम कश्मीरी कार्यकर्ता और नेताओं को ही अपनी आवाज उठाने का हक नहीं दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ दूसरे देशों के लोगों को कश्मीर के आम जनता के बारे में राय बनाने की इजाजत दी जा रही है। यह आम कश्मीरी के गुस्से को और अधिक भड़काने की तरह ही है। देखिए यूरोपियन यूनियन के सांसदों की मेहमानवाजी के दिन कश्मीर की गलियों से न्यूज क्लिक की ग्राउंड रिपोर्ट। Regarding this visit of European Union delegation to the Srinagar. So, I'm not a politician, I'm a common man. My faith is on dialogue and negotiations. Whatever they can realize, they know, and they will by visiting physically to this part of the state, they can understand the situation is like suddenly the close down of market as a symbol to show them that we are not happy with this development. We have lost the statehood or whatever you call it as an Article 370 and this 35A. But my personal opinion is this: they should freely visit and communicate with the people of the state so that they can understand the real situation. This is the one. The second thing is there is a breaking point in a human nature, so that breaking point we have crossed so many times. Our economy, our sociability and other linked surviving matters have been dented time and again. This type of lockdown we are seeing first time when there is closure of schools, colleges, offices and suspension of transportation and communication. We definitely suffer and we resist it and we condemn it simply. And I personally appeal to the moral consciousness or legal consciousness of the all citizens across the globe, including India, that they should respond this problem rather than they should counter. मोहम्मद रमज़ान आली कदम बसान सफ़र पे कर 7 किलोमीटर तकरीबन पैदल कह सहूलियत सफ़र पे कर अवे बच्ची एग्जाम दिवान अमिस इंतजार करान अमि नमूज बे 3 रेत गो इन बिचारन बचन जाय क्या वनस जुल्मुक एग्जाम दिवान नत क्या मजबूरी अमिच कि दान बचस पे वरी गवर्नमेंटस यह परेशानी यह बच्चा पास गया क्या गया इन पन फार्मलिटी पूर कर बाकी कहें बाकी सारे तकलीफ ये फाक यम लेडीज बिचार इन बचन हज वजह मजबूर यह प्रॉब्लम सड़ा प्रॉब्लम। तो इनने नोटिफिकेशन निकाली थी, पेपर 12:30 बजे है, बट हम घर से 9 बजे निकले हैं सो दैट हम टाइम पे पहुँचे। कौन जिम्मेवार है फिर इसका? अगर हम लेट पहुँचेंगे हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, वो तो नहीं मिलेगा ना। ये हमें बहुत नुकसान हो रहा है इस चीज़ का कि हालात ख़राब है, इंटरनेट ब्लॉक्ड है, कम्युनिकेशन सिस्टम ब्लॉक है। वैसे तो हम टीचर को कॉल कर लेते, बोलते कि अभी इसका क्या करना है उसका। जब कम्युनिकेशन सिस्टम ही नहीं था, पता ही नहीं थे टीचर्स कहाँ हैं, स्कूल्स बंद थे। ये जो लास्ट के 3-4 महीने होते हैं इन्हीं में बच्चा कुक करता है, सारा पढ़ता है। तो अब जब वही ब्लॉक रहे, उन्हीं में इंटरनेट नहीं था तो हम कुछ पढ़ नहीं पाए। अब जो पढ़ा है घर से पढ़ा है, घर वालों की हेल्प से पढ़ा है, जो फ्रेंड्स इकट्ठे मिल के पढ़ा है। बाकी तो टीचर से ख़ास हेल्प नहीं मिली हमें,
और इंटरनेट भी ब्लॉक था। तो Way out to every conflict or every dispute is negotiation. You should not close the doors of negotiation. You should not kill the negotiators. You should explore by repeating and insisting your opponent to negotiate, because being in a long-standing war itself is a defeat. Everything is getting worse and everything is getting economically too costly. So life is non-retake. Killing or psychological pain is not good for total health of this society. It should be released, it should be eased by means of dialogue with the main parties who are responsible for delay of this justice or liberation. आज से तकरीबन 88 दिन पहले 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35 को हटा दिए गए थे। आज यानी 31 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर में नई व्यवस्था लागू हो रही है। नई व्यवस्था के तहत जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा खत्म हो चुका है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 हिस्सों में बंटकर अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू ने आज यानी गुरुवार को नए केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में अस्तित्व में आए जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के तौर पर शपथ ली। जम्मू कश्मीर में लगा राष्ट्रपति शासन आज हटा लिया गया। जम्मू कश्मीर की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ने श्रीनगर स्थित राजभवन में आयोजित एक सादे समारोह में मुर्मू को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। आइए नजर डालते हैं क्या कहना है इस पर वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश का इस मुद्दे पर। हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत कहा जाने वाला शिखर मुकुट वो सूबा आज 2 खंडों में होगा। एक का नाम जम्मू कश्मीर होगा और दूसरे का नाम लद्दाख होगा। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जम्मू कश्मीर के पास जो केंद्र शासित क्षेत्र होगा, सूबा भी पूरी तरह नहीं, स्पेशल स्टेटस, विशेष दर्जे वाला राज्य, अब वो केंद्र शासित क्षेत्र होगा। उसके पास एक विधानसभा होगी जिसके बहुत सीमित अधिकार होंगे। लेकिन लद्दाख, उसके पास कोई अधिकार नहीं, उसके पास कोई विधानसभा नहीं। ये हाल होने जा रहा है आज की तारीख से। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, जम्मू कश्मीर के सूबे के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर उसके 300-400 साल का इतिहास देखिए तो वो लगातार त्रासदियों से गुजरा है। ट्रेजेडी, अजीब अजीब तरह की दुर्घटनाएं, अजीब अजीब तरह के उलटफेर, और इसकी सबसे बड़ी कैजुअलिटी अगर कोई बना है तो वो कश्मीरी अवाम है। बहुत सारे लोग इस पर खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, सत्ता का ऐसा लगता है कि यज्ञ हो रहा है, ऐसा लगता है कि कोई बहुत खुशहाली, ऐसा मौका है जब लोग हो सकता है पटाखे छोड़े जा रहे हों कहीं। लेकिन मैं समझता हूं कि भारत के लोकतंत्र के लिए और कश्मीर के इतिहास के लिए, आधुनिक इतिहास के लिए ये एक बड़ी ट्रेजेडी है। क्योंकि महात्मा गांधी को मैं याद कर रहा हूं। महात्मा गांधी अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार कश्मीर गए और उन्होंने कश्मीरियों के पक्ष में कहा था कि कश्मीर का भारत में जो भी भविष्य होगा वो बाद में तय किया जाएगा, क्योंकि वो आज़ादी से पहले गए थे, कुछ ही दिन पहले। लेकिन उन्होंने माना था कि कश्मीर का भारत में रहना भारत के सेक्युलरिज्म के लिए बहुत बड़ी परीक्षा है और ये बेहद ज़रूरी है। ये बात महात्मा गांधी ने कही थी। तो मैं समझता हूं कि कश्मीर को जो खंडित आज किया गया है 370 और 35A के हटाने के नाम पर, वो महात्मा गांधी के सपनों को भी खंडित किया गया है, खासकर कश्मीर संबंधी सपनों को। और जिन्हें महात्मा गांधी की उन लाइनों को पढ़ना है वो जरूर जम्मू कश्मीर के बारे में आप गूगल पर जाइए, महात्मा गांधी ऑन जम्मू कश्मीर आप पढ़ लीजिए। आपको महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारे डिटेल मिल जाएंगे। बहुत सारी किताबों में महात्मा गांधी के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में, खासकर जब आज़ादी से पहले वो गए थे एक बार, वो क्या उन्होंने कहा था आप ये देख लीजिए। जो बात मैं कह रहा हूं आप हूबहू वही पाएंगे। तो इस तरह दोस्तों, मेरा ये कहना है कि आज जो कुछ हो रहा है वो एक बेहद दुर्भाग्यजनक घटना है। आज वो सूबा विभाजित हो रहा है। इसको आप अगर खुशहाली के एक भारत के इतिहास का चैप्टर माने तो
कम से कम मैं एक कश्मीर के छात्र के नाते, कश्मीर की हिस्ट्री के एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट के नाते मैं इसे कबूल करने को तैयार नहीं हूं। और मैं आज के इस घटनाक्रम को कश्मीरी इतिहास का, भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की एक ट्रेजिक, एक बहुत ही दुखद और त्रासद घटना मानता हूं। अब चलते हैं पूर्वोत्तर भारत की तरफ। मेघालय जीवी के इमरजेंसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के एम्बुलेंस कर्मचारी 29 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ये कर्मचारी राज्य सरकार के खिलाफ तकरीबन 1 महीने से हड़ताल पर बैठे थे। मांगे ना पूरी होने की वजह से तकरीबन 200 एम्बुलेंस ड्राइवर भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर हुए। मेघालय EMRI मजदूर संघ के अध्यक्ष से न्यूज क्लिक की सहयोगी दीक्षा ने बात की। अध्यक्ष रोई पर खारसवाई ने बताया कि अभी 180 प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं। 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया जा चुका है। बहुत सारे लोगों की तबीयत बुरी स्थिति में गुजर रही है। पिछले 1 महीने के विरोध के बाद अभी तक राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। इनकी मांगे हैं कि सैलरी बढ़ाई जाए, उनके काम में लोगों की कमी है, इस कमी को पूरा किया जाए, उनकी छुट्टियों के निवेदन को स्वीकार किया जाए और बेकार हो चुकी एम्बुलेंस को बदला जाए। इनका कहना है कि ये साल भर से प्रबंधन के सामने अपनी मांगे रखते आ रहे हैं, लेकिन प्रबंधन ने कभी भी इनकी परेशानियों पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए सरकार जीवी के EMRI के करार को तोड़ दे और इसे पूरी तरह से सरकारी अधिकारी में ले ले। अब बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर पर। फेसबुक की कंपनी व्हाट्सएप ने कहा है कि इजराइल स्पाईवेयर पेगासस के जरिए कुछ अज्ञात इकाइयां वैश्विक स्तर पर जासूसी कर रही हैं। भारतीय पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता भी इस जासूसी का शिकार बने हैं। व्हाट्सएप ने कहा है कि वह इस स्पाईवेयर को बनाने वाली इजराइल की कंपनी NSO समूह के खिलाफ मुकदमा दायर करने जा रही है। यह इजराइल की निगरानी करने वाली कंपनी है। कहा जा रहा है कि इसके जरिए अज्ञात इकाइयों ने जासूसी के लिए दुनिया भर के तकरीबन 1400 लोगों के फोन हैक किए हैं। भारत से तकरीबन 2 दर्जन लोगों पर जासूसी किया गया है। इस खबर के आने के बाद कुछ मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यह कहना खुलकर शुरू कर दिया है कि उनके साथ भी जासूसी की गई थी। इस पर सुनिए प्रवीर पुर के आस्था की राय। Prabir, so could you first start by telling us what exactly is Pegasus and how does it work and how can it be used to target people, especially on WhatsApp since it's a safe software? Well, a lot of people have used WhatsApp in the belief that it is end-to-end encrypted and therefore it is safe. Now we know that 24 people at least in India were targeted, and who targeted them is a question we need to return to. And the total number targeted in the world is about 1400 or so, as you have said. And one of them is supposed to be Khashoggi, who was targeted obviously by Saudi Arabia, who had bought the software from Israel. Now, of course, in this case also, Israel has sold the software to Indian government because they claim they sell it only to government agencies, because the targets that have been revealed to have been considered, who have been really targeted, are people who obviously were targeted by the government of India. They're involved in the Bhima Koregaon case, charging Maoists for trying to infiltrate and create various things, activist Bela Bhatia in Chhattisgarh. So if we look at the profile of these people, these are also exactly the people who are sought to be targeted in different ways by the government, particularly before the elections. So this is clearly something we need to now seriously consider, that the governments along with agencies of the Israeli government are selling software which is really weaponized software. You asked what is Pegasus, what does it do? Now Pegasus is a weaponized software in the sense it is used to penetrate the devices of the people. So it is not something which penetrates WhatsApp. That is not what happens. What it does is, if you actually use the phone to which it has either given missed calls, or it has invited you to some group call, or you have got a video message which you have tried to open, all of these apparently plant malware in your cell phone, in your smartphone, and that in turn compromises the device itself. Once it does that,
then it has the ability to send everything you have on that phone to an external node, which is then run by the company which is, or the institution or the agency which has bought this software from the Israeli company. Now, this is how the devices get compromised. So, it's not that WhatsApp encryption is broken, but since anyway your device knows what you have written, what your contacts are, none of this are actually encrypted on your phone. Therefore, what it means is that entire information you have in the phone can be taken out, and this is exactly what happens. Now moving on to the international news. Israeli security forces stormed the house of Khalida Jarrar and arrested her. Khalida is a well-known Palestinian parliamentarian, human rights and women rights activist. This happened on the outskirts of Ramallah on Thursday morning. The parliamentarian's daughter Yafa Jarrar said that around 70 soldiers in 12 Israeli military vehicles raided the family's home at around 3 a.m. while her mother and sister were asleep. Jarrar has been taken to an unknown location on undisclosed charges. 57-year-old Khalida Jarrar is a prominent member of the leftist Palestinian political party, the Popular Front for the Liberation of Palestine, or PFLP. She is also a member of the Palestinian Legislative Council. She has been elected as one of the 3 deputies from her party. She is also a forceful advocate for the rights of Palestinian women and prisoners and has served as the former vice chair and executive director of the Adamir Prisoner Support and Human Rights Association. She has faced persecution by the Israeli security services several times in the past, having been arrested in 2015 and 2017. She was last arrested on July 2, 2017 under charges of being a senior member of the PFLP, which is designated as a terrorist organization by Israel, the United States and the European Union. Khalida was placed under administrative detention in the Damon prison without trial for 6 months. Her detention was renewed 3 more times, once for 6 months and twice for 4 months each, before she was finally released on 28 February this year after 20 months in administrative detention. Moving on to Peru, on October 30th, the Peruvian Mining Council announced its final ruling in the case of the Tia Maria copper mining project located in the Tambo Valley. The Mining Council declared that the appeals against the project are unfounded and also removed the temporary suspension of the license given to the Mexican mining company Southern Copper Corporation. The inhabitants, farmers, environmentalists, provincial and regional authorities of the area have been resisting the construction of the Tia Maria mining project for almost a decade, raising concerns about the serious impacts that the mining operations will have on the environment and agriculture. Following the Mining Council's verdict, massive protests broke out in the valley. Several small demonstrations were held in districts of Coca Chacra, Deen Valdivia and Punta de Bombon. Dozens of people demonstrated in the center of the cities with green flags that said, "Agro yes, mining no." Elmer Cacares Lica, the governor of the region, called the granted license illegal and said that it only served transnational interests. And now moving on to sports, it's a big weekend for India's senior hockey teams. The women play the USA and the men Russia over 2 legs. The winners get a spot at the 2020 Tokyo Olympics. An interesting angle on the sport coming up is the fact that the women have hardly ever had a chance to play important competitive fixtures in India. The captain Rani Rampal has played close to 250 games for India but has only ever experienced a competitive home game once in all that time. For the rest of the squad, this will be a first. NewsClick Sports has more. Question 1. What is the current status of the women's team and what have they been up to in the past few months? So, in the past few months, last year, I'm going to go a little bit beyond the past few months. Last year, they reached the quarterfinals of the Women's World Cup and they lost to eventual finalists Ireland. Earlier this year, they won the FIH World Series, just like their male counterparts. But they did it in Japan. They beat the hosts, Japan. And that's how they have qualified for this Olympic qualifier now against the USA. Just last month, they beat Great Britain, who are the defending Olympic gold medalists in a test series in Great Britain. So the women's team are fairly quickly climbing up the ladder. They're doing really well regardless of who they're playing. Fair enough. And this is a sport that talks quite often of gender parity, especially in the context of pay.
But when it comes to scheduling and these sorts of issues, as well as fan interest in the women's game in India, that seems to be missing. So I don't know what gender parity in pay means, because hockey is an amateur sport. All right, in India, even if Hockey India says that they're paying all the players equally, it's not like they're not paying them enormous amounts of money. Also, Hockey India's attitude towards the women's game is a little different from their attitude towards the men's game. Simply gleaned from the fact that they bid for the Women's World Cup for 2023 and then withdrew the bid and instead submitted a bid for the Men's World Cup. They just hosted the Men's World Cup last year and they've submitted a bid again, whereas they prefer not to hold the Women's World Cup. Obviously, this has got to do with like financial marketability, whether people in this country are interested in the women's game at all or not, and the fact that maybe there are not enough fans watching women's hockey as a whole. All this will also, we'll learn a little more about this from this qualifier that's coming up, where they're playing at the same venue just an hour before the men's team take to the field in Bhubaneswar. So I hope the fans will flood the venue and prove And that happens when? That happens tomorrow, November 1st. And then the second leg of the qualifier is on November 2nd. So I would say watch both. And this is all we have in this episode of the Daily Roundup. For more such stories and videos, visit our website newsclick.in, subscribe to our YouTube channel and follow us on Facebook, Twitter and Instagram. शुक्रिया, आप देखते रहिए न्यूज़ क्लिक.